Hello, good morning, everyone. So, so today, as you might be aware, that we are going to talk about open interest and how that is helpful for your trading and investment. And of course, this we will cover it in both the language, that is Hindi and English. And the format for this webinar will be that there will be a presentation that I have prepared. After that, we will speak about some examples. But it is important to note that this webinar is just for educational purpose, and whatever we speak in this webinar should not be taken as a recommendation. And as per the recent guidelines which is given by the SEBI, so we will be talking of the stocks or taking the examples which are 3 months prior, okay, and not the latest trends. So yes, please keep this in mind, while we are discussing about the stocks in the webinar. So just to repeat once again, we won't be discussing the ones which are the recent trend, but yes, I'll be covering all the concepts uh, in detail, so that it would be extremely easy for you to find out those stocks using the methodology. So so yeah, so without wasting much time, I'll get into the presentation. But yeah, before that, there is one thing that I want to say, that for this webinar exclusively, there is a discount that we are running. So people who enroll for this webinar, they are entitled for a certain discount. So 1 year, otherwise it is 5600. So 1 year, if they subscribe during this webinar, they'll get it around uh, somewhere around 4700 rupees, and for 6 months it is 2500 rupees. So the link will be given in the chat in a while. But yeah, I mean, this is the basically the scheme that is there, that is exclusively for the webinar. And once you do this, please let us know the name in the comments, so that we can give the access immediately. And Amit, to your point, yes, there will be an recording that will be available on Strike platform, in the Twitter, as well as in the YouTube channel. Okay. So yes, wait, let me present my screen. Okay. Yeah. So one thing is that for people who are new to this webinar, we have this Twitter platform, Strike underscore IC. So if you type Strike underscore IC, so you will get our handle. Okay. You can follow us. We share a lot of insights over here of our features and how to use it. I am sure you will probably find this very helpful. Apart from that, we have a YouTube channel as well, which is Strike Money. So we have right now made two YouTube channel. One is Strike Money Hindi. So so this especially caters to all our Hindi audience. Okay, and as I mentioned, I mean, this webinar will be in English and Hindi. So जो भी ट्विटर के जो हिंदी में सुनना चाहते हैं, sorry, of YouTube, whoever wants to listen in Hindi, there is a dedicated channel that is given over here, Strike Money Hindi. And we also have Strike Money. Okay, so here, we post all the contents, all the educational programs, so whatever webinars that we do, you will find it under live section. And there are many other more educational videos that you will find out over here. Okay. So yes, just to let you know once again, we are right now running this offer. So you can go to the link that has been shared in the comment. Also, I will just be there for 5 seconds. I mean, there is this scanner that is there. If people who feel comfortable paying through the scanners, they can scan it. I'll just keep it for 5 seconds, and then we'll resume to the webinar. Okay.
So yes, so open interest. I mean, I think this is one of the most important, indicator which helps you to understand the medium term trend. Okay, so let me be very clear in this part. बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओपन इंटरेस्ट मतलब बस एक दो दिन का व्यू मिलता है. दैट इज नॉट ट्रू. ओपन इंटरेस्ट is useful to catch medium term trend. Okay, this is very important to understand. ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये एक्चुअली आपको मीडियम टर्म में आपको अच्छा रिजल्ट देता है. ओके, सो टू एनालाइज a stock, it should be a combination of price plus open interest. Okay, whenever there is a conflict, okay, give price action more importance. uh, okay, give price action more importance. Yeah, give me a minute. Yeah, sorry for the disturbance. So yes, so open interest, as I mentioned, that whenever there is a conflict between price and open interest, between price and open interest, give price action more importance. Okay, I mean, this is something that I want you to understand, because just like other indicators, open interest is also one such indicator. You can consider this as, say RSI. So RSI may, whenever there is a positive divergence, negative divergence or anything, we give a lot more focus on the price action. And जब price change होता है, तब you will see that negative divergence or positive divergence playing out. So as I mentioned कि जब जब भी प्राइस और ओपन इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, गिव मोर इम्पोर्टेंस टू प्राइस, बिकॉज प्राइस डिक्टेट द ट्रेंड. ओके, एंड जिस डायरेक्शन में भी बाद में ट्रेंड रहेगा, उस डायरेक्शन में ओपन इंटरेस्ट फॉलो होगा. So these are basic simple things that you need to understand before we start understanding the concept of open interest built up. Okay, let me see if there is any comment. HD. So I think Jitendra ji, there is mine. I have kept it on full HD only. I think you will need to do that setting on your end. I think at my end, the setting is already there. Uh, Sunlittered, yes, we are there on. Yes, we are there on YouTube channel. It is, as I showed you over here. Our link is this Strike Money. Okay, you can search it in YouTube and you will find our channel. There is also a Hindi channel, Strike Money Hindi. You will find it. Find us over there as well. The other thing is that how is strike different from India charts? So in India charts, basically, we follow a lot about elite wave, and we share our observations based on that. But strike is purely an analytical tool. So it does not share any viewer as such, but these are all the data points that we provide for you to analyze the whole market. So it ranges from technical, derivatives, fundamentals, sentiment indicators, then all the corporate action, whatever you require, everything you will find it on strike. Okay, so Sridhar, do you post
link to subscribe with discount. Yes, we have just provided it. You can click over there, and if you enroll it, then then just put it in the comment that you have enrolled it, and we'll give you an access quickly. So yes, so coming back to the open interest part, see, this is important. So all the people who are new to the open interest concept, think of it as volume. Okay, and you try to interpret it. So whenever, जब भी प्राइस ऊपर जाता है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है, दैट सजेस्ट लॉन्ग बिल्टअप. दैट मीन्स पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक. ओके, एंड द आइडिया इज दैट कि लोगों को इंटरेस्ट है, so that is why in the near term the uptrend can prevail. Okay, second thing is price rising higher. Okay, open interest going down. ओपन इंटरेस्ट गोइंग डाउन मतलब मान लो कि अगर ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई था शॉर्ट्स के वजह से, तो जब भी प्राइस नीचे जाता है एंड वो शॉर्ट्स कट होते हैं, तो वो ओपन इंटरेस्ट को नीचे लाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय शॉर्ट कवरिंग. ओके, शॉर्ट कवरिंग इज ऑल्सो बुलिश. As we go more into the webinar, what main thing that we have to find out is where is it that the short covering is happening, because that is the place where we can actually make good money. And this is the phase जहाँ पे जो rise भी रहता है वो बहुत powerful होता है. And I'll tell you the methodology how to find it. So yes, the third scenario is prices going down and open interest rising higher. Okay, this is an indication of short built up. जैसे कि मान लीजिए, wait, let me open up Paint. So prices is going down and open interest is rising higher. That means लोग प्राइस नीचे जा रहे हैं तो शॉर्ट कर रहे हैं. दैट इज मोर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओपन and those are on the short side. So I know, I mean, some of you may say कि कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी तो कर रहा है, करेक्ट. बट द थिंग इज दैट कि अगर वो प्राइसेस नीचे जा रहे हैं एंड ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, तो दैट मीन्स द शॉर्टर्स हैव अ लॉट मोर होल्ड. मतलब शॉर्टर्स के हाथों में ज्यादा पकड़ है ऑफ दिस ट्रेंड. एंड दैट इज व्हाई वी से that whenever this scenario happens कि prices go down and open interest rises higher, मतलब short built up हो रहा है. and similarly जब भी prices नीचे जा रहे हैं, okay, and open interest is also going down, तो ऐसा हो सकता है कि पहले जब ये अप मूव रहा था तब बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग किया था, एंड अब जब ये प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तब ये ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है. ओके, विच मीन्स कि लोग अपने लॉन्ग अनवाइंड कर रहे हैं. ठीक है, so this is the basic interpretation. So wait, let me write over here, short built up, long unwinding. Okay, the first scenario was prices rising higher, open interest rising higher. This is a case of long built up. Okay, then prices rising higher but open interest going down. So ये केस में क्या रहेगा कि प्रायर अप ट्रेंड रहेगा जब भी सॉरी प्रायर डाउन ट्रेंड रहेगा, बिकॉज जब ये गिर रहा था तब ओपन इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था, एंड देन व्हेन द अप मूव इज हैपनिंग द ओपन इंटरेस्ट इज अनवाइंडिंग. सो दिस सिनेरियो यू विल कॉल इट एज शॉर्ट कवरिंग. ओके, so this is the thing that you have to understand. This is the first thing. Now the second thing is that कि open interest में this is my observation, and I have learned it from one of the guy who was into institutional derivatives. So he had suggested me this, that if you follow the pattern of open interest, आपको हमेशा ये स्टेज में दिखेगा, which means that if I take a screenshot of this, okay, so what you will see is that कि this is stage 1. okay, तो क्या होता है कि when the prices, wait, let me
enlarge this one. Yeah. So what happens is that ke initial stage mein, okay, in an uptrend when the prices are rising higher, okay, so this is price, this is open interest. Okay, when the prices are rising higher, the open interest will also rise. Okay, so this will lead to long built up. Okay, then what will happen is that whenever the prices are going down, ठीक है, तो ये जिन्होंने भी इधर लॉन्ग किया था, the weak hands or basically everyone will eventually try to get out. पहले all the strong hands who know that the uptrend has possibly ended, उन लोग सबसे पहले निकलेंगे. And then as the price decline confirms, you will see the open interest also going down. So this is stage 1, which is of long built up. This is stage 2 of long unwinding. Okay, here if we do, this is stage 2, which is long unwinding. Then what we see is stage 3, that is short built up. Okay, and now as I told you कि हमको ये फेज देखना है, ये फेज तब देखना है जब we are approaching towards the end, and to know whether it is ending or not, that is a little tricky thing. But जब हम हमारा ये presentation खत्म करेंगे, hopefully you will be in a position to understand. If not, there will be a Q&A session and I'm happy to clarify all your doubts. Okay, so now when we come to the third stage, तो क्या होता है कि ये जो अनवाइंडिंग आपने यहां तक देख ली थी, राइट, सो इसके बाद क्या होता है, प्राइसेस और भी नीचे गिरते हैं. एंड जब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है कि मे बी सम टेक्निकल लेवल हैज ब्रीच्ड और समथिंग लाइक दैट, एंड सारे जो भी ट्रेंड फॉलोअर्स रहते हैं वो ये पिक्चर में आना चालू करते हैं, एंड देन दे कीप शॉर्टिंग अ लॉट. ओके, एंड इट रीचेस अ पॉइंट वंस अगेन वेयर it is sort of at its peak, and then basically the open interest is at its peak. So this is the third stage, which is basically the short built up. Okay, that we see it over here, this is short built up. Okay, एंड इसके बाद जो मैंने आपको बोला कि ये जो एंड होता है, इधर से जो मूव आता है, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कैच इफ यू आर बेसिकली अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर और अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बिकॉज यहां पर से जो ट्रेंड आते हैं दैट कैन बी वेरी बिग ट्रेंड्स, बिकॉज ये शॉर्ट्स फुल हो जाते हैं, एंड शॉर्ट्स के बाद जब ये शॉर्ट कवरिंग होना चालू होता है, ओके, देन वी गेट टू दिस फेज विच इज बेसिकली फेज 4, that is long unwinding. And this, as I mentioned to you, sorry, this is basically the phase of short covering, जहां पे ये जो भी शॉर्ट्स जो इधर जो बने थे, ओके, ये अपमूव में वो सारे शॉर्ट्स अनवाइंड होना चालू करते हैं. एंड अगेन व्हाट विल हैपन इज दैट देयर माइट बी सम टेक्निकल ट्रिगर दैट मे हैपन, जहां पर से लोग रियलाइज के ये ट्रेंड चेंज हो रहा है. And then once it starts rising higher, then again this phase 1 starts. Basically ये unwinding होके you will see again this phase 1 starting of long unwinding, long built up. And that's where if you catch the stock around this phase, okay, that is phase 4 and phase 1, that is the point where you will make some serious money. And apart from that, the price action that you will see is very swift, because what happens is that जब ये शॉर्टिंग होता है एंड जब ये शॉर्ट्स कवर होना चालू करता है, वो शॉर्ट कवरिंग बहुत फास्ट होता है, एंड यू विल सी अ वेरी गुड मूव ओवर देयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब वो शॉर्ट बिल्ट अप सब सारे शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे सिस्टम में एंड द ट्रेंड इज ऑन द अपसाइड, तब जब वो लॉन्ग बिल्ट अप भी चालू होंगे, तो यू विल बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस. बट trying to estimate the end of the short built up phase, okay, the end of the short built up phase, this is a little tricky part. And this is where, like I told you, there will be a conflict between price and open interest. Okay, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्राइसेस नीचे ही जा रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट हाई ऊपर ऊपर जाते जा रहा है. सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ओपन इंटरेस्ट इज लाइक अ सीलिंग, ठीक है, जिसके बियॉन्ड वो ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ सकता है. नाउ इफ यू आस्क मी कि वो सीलिंग क्या है, दैट वी डोंट नो, बिकॉज सी जब ये प्राइस बैन में आता है, आई मीन कोई भी स्टॉक बैन में आता है,
तो इट इज फ्यूचर प्लस ऑप्शंस का कंबाइंड पोजीशन मिला के वो बैंड में आता है, राइट? तो वो फ्यूचर्स में उसका क्या एक्सटेंट तक सीलिंग है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट। बट जब हमको प्राइस एक्शन ऐसे कुछ साइंस देता है कि ये हायर हाई बन रहा है, कुछ भी एवरेजेस के ऊपर ब्रेक हो रहा है, देन ऑल द पीपल हु आर इन शॉर्ट, उन लोग नर्वस होना चालू होंगे, एंड that nervousness will lead to a good uptrend and a short covering rally. And this of course you will be able to see it in the price action as well. खाली ये चीज ध्यान रखना है कि when you are analyzing the trend for a when you are analyzing a trend and expecting a reversal, look out for the weekly price action, weekly chart, okay, and not daily chart. बिकॉज डेली चार्ट में अगर वो एक छोटा सा पुल बैक आके फिर भी वो नीचे आएगा ना, तो इट कैन कीप हैपनिंग, एंड आई विल शो यू द एग्जांपल हाउ दिस हैपेंस। बट जब ये वीकली में मान लो कि अगर वो 20 वीक के ऊपर चला गया वो प्राइस एक्शन, ओके, देन इट बिकम्स अ गुड इंडिकेटर। अगर मान लो कि ओपन इंटरेस्ट इज वेरी हाई, राइट, and the stock is crossing above the 20 week and it has started making higher high, then that is a sign that a big up move can happen. Now you will tell me कि boss, you have told me to see the weekly chart, but मान लो कि वीकली में लो बना है 100 का, ओके, एंड मेरे को रिवर्सल पॉइंट आ रहा है ऑलमोस्ट 115 पे, so I am losing out 15% over year, right? But trust me, जब ये रिवर्सल्स होंगे तो ये 100 का ना आपको 250 300 भी देखने मिलेगा, और इट कैन बी इवन बिगर देन दैट। so to that extent the reversal can happen, okay? So that is why I mentioned कि ये ओपन इंटरेस्ट खाली फ्यूचर्स ट्रेडर के लिए नहीं है या ऑप्शंस के लिए नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बिकॉज ये जब रिवर्सल आते हैं, these are not short term reversals and these are meaningful medium term reversals, and I'll show you with those examples as well, okay? So I hope you understood the second part. If there is any question, I will probably take it up. Yeah, so Sunil Kilwani, you have subscribed for 1 year, so yes, our team will give you the access. Can you please provide us a scanner for searching stock? So yes, share market trader Samir Kalani, we have made a scanner as well for this, and after the end of the this presentation, I'll show you how to see those stocks as well, okay? Now, so I am assuming that people have understood this phase of the market, which is basically stage 1 is long built up, stage 2 is long unwinding, फिर short built up होता है, short built up के बाद short covering होता है, and this phases keep on happening, okay? This will keep happening and you will see the stock circulating in this phase only, okay? Now the third part is that when is the time where you need to understand कि यहाँ पे कुछ action लेना है, okay, right? That when is the time that you need to know that okay, something big might happen. So something big might happen when you have two scenarios: either your open interest is very high or either your open interest is very low, okay? So for example, so let me take a fresh page. Okay, this is open interest, for example. So if this is the historical trend of open interest, okay, so या तो open interest is very high compared to its past. So basically you can see over here that over here the open interest is very high. So this might be the point where you need to take where
यू नीड टू नो के व्हाट इज गोना हैपन, मतलब यहाँ पर से कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है. सिमिलरली व्हेन योर ओपन इंटरेस्ट इज वेरी लो, that is also a sign कि यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है. Okay, so basically if we have to understand in overall context, when the open interest is very high, या तो वो टाइम पे या ओपन इंटरेस्ट इज वेरी लो. ओके, ये टाइम पे कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस है, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू understand the historical data for that. Okay, the good part is that in strike, okay, if you see over here, you know, we actually have the historical data of almost 12 years now. Okay, starting from 2012. So if you see this, you know, we have this entire data from 2012, and you will briefly understand which are the points which are I mean where we are coming to an extreme, and which are the points जहाँ पे हम एकदम lowest open interest पे हैं. Okay, so you will be able to understand this. सो यहाँ पर आपको मेन यही आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई है और कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत लो है. नाउ यू विल टेल मी कि अरे ये मैं मैन्युअली एक एक थोड़ी मैं चेक करूंगा. ओके, इज देयर अ स्कैनर फॉर दैट? सो यस, देयर इज वन स्कैनर फॉर दैट. मतलब देयर विल बी सम मोर स्कैनर्स दैट वी विल बिल्ड, बट राइट नाउ देयर इज वन स्कैनर दैट वी हैव मेड which we will discuss at the end of the presentation. सो व्हेन योर ओपन इंटरेस्ट इज वेरी हाई, ठीक है, इसका दो मतलब हो सकता है कि ईदर देर इज गोना बी अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन और देर विल बी अ ट्रेंड रिवर्सल. ओके, एंड व्हेन द ओपन इंटरेस्ट इज लो, ठीक है, जब ओपन इंटरेस्ट एकदम कम होता है, इट मीन्स वन थिंग ओनली, दैट यहां पर से ना कोई भी साइड पे ट्रेंड पिकअप होने ही वाला है. ओके, and that we need to take care. So what do I mean by this? Let me explain. See, when your, so this is your price action, for example. Okay, in this case, so this is price action, this is open interest. Okay, so imagine that this is your open interest. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है कि you can see that over here the open interest is breaking out on the upside and the price action is breaking on the downside. Okay, so this is a scenario where trend continuation can happen, which means कि ये जो bearish trend है that will keep prevailing. तो इसमें क्या होगा, बीच में थोड़े पुल बैक आएंगे एंड यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में अनवाइंडिंग होगा, फिर वापस when it is making a new low, so open interest will keep going higher, and this is a sign of a trend continuation. Okay, now there will be a second scenario जहां पे okay, so in this scenario what happens is that open interest might behave something like this, जहां पे मान लो कि ये था ऐसे, फिर जब जब भी शॉर्ट होते थे तब ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता था. ओके, तो यहाँ पे वापस ही अपमूव आएगा, अनवाइंडिंग होगा, एंड देन अगेन when shorts are getting built, you know, open interest will be very high. Okay, and then यहाँ पे ये वाले शॉर्ट पे, ठीक है, you will again see open interest at the highest point. So now in this case you know that this is acting as a very strong support for the stock, correct? And open interest अगर बहुत ज़्यादा high है, and if the stock is coming to some weekly or a monthly support level, you know, be it averages or price action, you know, from there is a good chance that when the next leg of up move starts or when the stock bounces back, you will initially start seeing the open interest going down. Okay,
एंड देन जब एक ट्रेंड रिवर्सल होगा, मान लो कि यहाँ पे ये पूरे डिक्लाइन का 61.8% ब्रेक हुआ या मूविंग एवरेजेस ऊपर में ब्रेक हुआ, then you will start seeing a very sharp unwinding of open interest. and यहाँ पर जो भी people who are betting on a reversal for the stocks, they will start buying aggressively. and ये जो shorts जिसने बहुत सारे shorts किए थे ये decline में, they will start covering their position, and that will lead to a very good move. So when your trend is high, okay, I mean most of the time this is where you will get a very strong move. And the main point is that you need to find the point over here, okay, trend reversal, because this is the point जहां पे ये जो पूरा जो स्टेज है ये आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर आप मैक्सिमम जब ये शॉर्ट्स बन गए हैं एंड जब ये फेज चालू होने वाला है, दैट इज वेयर यू आर कैचिंग. एंड जब ये शॉर्ट कवरिंग का एक फेज होगा उसके बाद लॉन्ग बिल्टअप भी होगा, एंड दिस विल गिव यू अ वेरी बिग रनवे, ओके, ऑन द अपसाइड. तो जस्ट टू रिपीट इट इन हिंदी एज वेल, देर आर यहाँ पर दो सिनेरियोज होते हैं जब भी ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ऊपर आ जाता है, ठीक है, एंड व्हेन द ट्रेंड, सो ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो देर आर टू आउटकम्स दैट इज पॉसिबल. दैट इज, एक तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा, मतलब ये जो प्राइस एक्शन का जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है, तो ये कंटिन्यू होगा. जब जब भी स्टॉक गिरेगा ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब पुल बैक आएगा तब वो थोड़े शॉर्ट कवरिंग होंगे, एंड देन अगेन इट विल कीप प्राइसिंग हायर, ओके, टिल द पॉइंट कि वो ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड देन द नेक्स्ट फेज शुड हैपन विच इज अनवाइंडिंग, ठीक है. जब ये दूसरा सिनेरियो है, ओके, एंड दिस इज द सिनेरियो जहां पे आपको और भी ज्यादा फोकस करना है इफ यू आर अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर और अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, विच मीन्स दैट कि आपको ये फाइंड करना है कि कौन से स्टॉक्स अपने वीकली या मंथली के बड़े सपोर्ट लेवल पे आ रहे हैं, एंड कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत अबनॉर्मली हाई है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस नीचे गए हैं एंड द ओपन इंटरेस्ट इज एट इट्स पीक, मतलब लोगों ने वो फॉल में बहुत सारा शॉर्टिंग किया है. सो व्हेन द प्राइस इज गोइंग टू रिवर्स, जब ये प्राइस रिवर्सल आने वाला है तब बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होगा, एंड दैट विल लीड टू अ वेरी शार्प रिकवरी ऑन द अपसाइड, ओके. सो दिस वाज द इनिशियल पार्ट. एंड जब ओपन इंटरेस्ट लो होता है तब भी एक इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है, बट इसके लिए कभी कभी आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है कि मान लो कि दिस इज द स्टॉक, ओके, तो ये ओपन इंटरेस्ट ना आपको कुछ इस तरह से बिहेव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है ना कि जब भी शॉर्ट होते हैं तब भी ओपन इंटरेस्ट बहुत क्रेजी है, आई मीन एकदम वाइल्डली ऊपर चला जाता है, एंड यू सी वेरी अबनॉर्मल लेवल्स दैट यू माइट हैव नॉट सीन इन द हिस्ट्री. तो इसमें ओपन इंटरेस्ट आपको ना कुछ ऐसे दिखाई देगा कि जब ये पीक पे रहता है तब ओपन इंटरेस्ट एकदम कम हो जाता है, एंड एट दिस लो द ओपन इंटरेस्ट इज वेरी हाई, ओके. अगेन व्हाट हैपेंस इज दैट यहाँ पे ये बीच में थोड़ा अप मूव में थोड़ा लॉन्ग बिल्टअप भी होने लगता है, एंड एट दिस पॉइंट द ओपन इंटरेस्ट रीचेज एन एक्सट्रीम ऑन द डाउन साइड, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो फिर क्या होता है कि यहां पर से अगर ये बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड पिक होने वाला है, ठीक है, तो यू विल स्टार्ट सीइंग अ मेजर राइज इन द ओपन इंटरेस्ट, एंड यू विल सी टू द लेवल्स दैट यू माइट हैव नॉट सीन इट इन द पास्ट, ओके. सो ये कब होता है, जब ये या तो एंड ऑफ द अप ट्रेंड या एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड में आप ऐसा कुछ सिनेरियोस देखोगे, ओके. एंड आई हैव प्रिपेयर्ड सम एग्जांपल्स फॉर दैट, सो वी विल लुक इनटू दैट. बट दिस इज द सिनेरियो जहां पे योर ओपन इंटरेस्ट इज लो, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि देर इज अ ट्रेंड दैट कैन पिक अप सूनर और लेटर, ओके. So let me just pause over here and see if, yeah. So Rohit Panwar, is there a mobile app for this? No, not at this point of time, but we don't actually intend to build on the app in the near term, but there will be a mobile, I mean the browser version in the mobile for Strike soon. I mean we are working on that, but you can expect that. But as of now,
for the best experience, you can check it in the desktop or on the iPad. Okay, so you will be able to see in those places as of now. So desktop, laptop, or iPad, that is where it is working well right now. So yeah, coming back to the presentation, and as I told you, so see, first what we learned was कि ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कि आपको कैसे समझ में आएगा कि ये लॉन्ग बिल्टअप है, शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट बिल्टअप है, या लॉन्ग अनवाइंडिंग है. देन इसके फेजेस क्या है, विच आई एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, कि लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, एंड दिस फेज कीप्स ऑन हैपनिंग. The third thing it is important to understand is that कि कौन से पॉइंट पे एक्शन लेना है. तो एक्शन तब लेना है जब आपका ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई हो या बहुत अबनॉर्मली लो हो. ठीक है, ये बीच वाले पॉइंट्स में आपको कुछ भी आपको समझने नहीं वाला है, बट व्हेन इट इज एट एन एक्सट्रीम, so that is where you need to take a note of. Now see, I have I had prepared some examples based on the past. So you can see over here कि यूपीएल में जब गिरना चालू हुआ, ओके, दैट्स व्हेन द ओपन इंटरेस्ट स्टार्टेड राइजिंग हायर. और इसमें क्या होता था कि हर बार पुल बैक में थोड़ा नीचे होता था ओपन इंटरेस्ट, बट अगेन वो ऊपर जाता था. एंड दिस इज वेयर आई टोल्ड यू दैट picking short built up is very difficult. Okay, that is why you always have to give a lot of emphasis on price. Okay, basically जहां पर भी conflict है, whenever there is a conflict between price and open interest, give price action more important. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक, आप देख सकते हो मैंने इधर ये 20 वीक मूविंग एवरेज डाला है. तो ये स्टॉक हर बार 20 वीक को टेस्ट करता था. There used to be some unwinding in the open interest, and then in the next leg of decline वापस open interest बढ़ते जाता था. And this kept on happening to the point जब ये prices बहुत नीचे गिर गए and the open interest was at its peak. यहाँ पे पॉजिटिव कंफर्मेशन तब मिलता है कि जब ये प्राइस 20 वीक ऊपर में तोड़ते हैं एंड सस्टेन होने लगते हैं. दैट इज वेयर. सो यहाँ पे वन थिंग इज दैट यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ पोजीशन साइजिंग. पहले आपने मान लो कि अगर बहुत ओवरसोल्ड हो गया और ये कोई बहुत बड़े सपोर्ट लेवल पे आया है, तो मान लो आपने 20-30% लिया. देन व्हेन यू आर सीइंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स एंड मूविंग एवरेजेस ब्रेकआउट, दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट बिल्डिंग अप योर पोजीशन, so that you don't lose money on 100%, but you lose money on 20 or 30% if you're wrong, and if you're right, you make money on that 100%. ठीक है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज अ गुड मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेड दैट कैन प्ले आउट जब ये शॉर्ट कवरिंग रैली आएंगे. तो द सेकेंड सिनेरियो इज दैट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वो सिनेरियो है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम हो गया. जैसे कि आप देख सकते हो कि ये स्टॉक ने नया हाई मारा, बट ओपन इंटरेस्ट फिर भी घटता ही गया, एंड इवेंचुअली ये प्राइस में 20-25% का करेक्शन आया. वो एंड सॉरी, नॉट 20-25%, बट 15-20% का कुछ तो करेक्शन आया था. एंड you can see that the open interest was at its lowest when the price was at its peak. मतलब जब ये नया हाई मारा, तब ओपन इंटरेस्ट ने ये नहीं कंफर्म किया कि लोग अपना लॉन्ग कैरी कर रहे हैं. इनफैक्ट लोगों ने बहुत सारा अपना माल एट द टॉप उतार दिया, एंड दैट इज व्हेन द डिक्लाइन स्टार्टेड, द ओपन इंटरेस्ट स्टार्टेड बिल्डिंग अप अ बिट. ओके, सो दिस वाज द सेकंड एग्जांपल वेयर the stock is making higher high, but the open interest reduces significantly at the second high, and this tells you that people are unwinding their position, and you need to be careful. Okay, so ये basically ये चीज का एग्जाम्पल है. जब तो ओपन इंटरेस्ट बहुत कम रहेगा, there is a chance that some sort of trend can pick up. The third example is also that कि ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहा था. इनफैक्ट आप देख सकते हो कि जब ये गिर रहा था तो ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई था, एंड देन ओवर ईयर ओपन इंटरेस्ट धीरे 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 रिड्यूस होने लग गया था, एंड बाय 2020 मार्च कोविड ओपन इंटरेस्ट अब नॉर्मली लो हो गया था. ओके, एंड इट हैड ऑलमोस्ट रीच इट्स लोएस्ट पॉइंट इन द लास्ट 2-3 years, and this is where eventually a big trend pickup happened. Okay, सो आपको क्लू कब मिलेगा कि फर्स्टली ओपन इंटरेस्ट एकदम लो है, एंड देन
अप मूव में ना आप देखोगे कि लॉन्ग बिल्टअप बनते जा रहे हैं, एंड जब ये आप देखोगे कि अप मूव में लॉन्ग बिल्टअप कंटिन्यूसली बनते जा रहे हैं, देन दिस इज द साइन दैट पीपल आर इनटू दिस स्टॉक, एंड देन यू हैव टू बी इनटू दैट स्टॉक. एंड जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये कुछ थोड़े टाइम में ही खत्म नहीं होता. एज यू कैन सी ये 500 से मूव होके ये 1100 तक गया, एंड दिस वाज लुपिन व्हिच वाज अ लार्ज कैप स्टॉक. ओके, so this is the third example. The fourth scenario is that कि जब ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई पे हो जाता है, आई मीन या तो ये देखो आप ये वाले सिनेरियो में देख सकते हो कि एट दिस टॉप, व्हेन द स्टॉक हैड टेस्टेड इट्स गैप एरिया, और ये गैप एरिया ऑलमोस्ट 1-2 साल से बंद नहीं हुआ था. आई मीन द गैप वाज नॉट फिल्ड. सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, वो गैप फिल किया, वहां पे कुछ ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा बना पैटर्न इन्फोसिस में, एंड जब ये गिरता गया तब ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ता गया. एंड यू कैन सी कि इसमें वो क्लासिक वो फॉलो हुआ था कि वेन एवर द प्राइजेस वर गोइंग डाउन, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा था. जब भी पुल बैक्स आते थे तब ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा था, एंड एट दिस पीक द ओपन इंटरेस्ट वाज अगेन एट इट्स लोएस्ट पॉइंट. फिर जब ये सेकेंड डिक्लाइन आया तब अगेन द ओपन इंटरेस्ट रोज हायर. ओके, एंड देन ये यहाँ पे शॉर्टिंग हुआ, एंड देन द नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव केम, तो वहां पे वापस ओपन इंटरेस्ट एकदम कम हो गया. एंड एट द थर्ड पीक दैट यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे अगेन ओपन इंटरेस्ट कम था, एंड देन जब प्राइस गिरा तब वापस ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया. ओके, सो हमेशा प्राइस और ओपन इंटरेस्ट को साथ में देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन से सिनेरियोज बिल्ड हो रहे हैं. इज इट लॉन्ग बिल्टअप, इज इट शॉर्ट बिल्टअप, is it that the short covering is happening or long unwinding is happening. Okay, so these were the examples. So broadly मैंने जो आपको ये जो पेंट में जो बताया, so this is what is the real time example over here. Okay, now the third part comes is that कि you have understood all this concept. Okay, now how do you scan, कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई स्टॉक अब नॉर्मली हाई ओपन इंटरेस्ट पे है या अब नॉर्मली लो ओपन इंटरेस्ट पे है. तो इसके लिए देर आर टू थिंग्स दैट इज वेरी हेल्पफुल. सो वेट 1 minute बिफोर गोइंग टू द स्कैनर्स, आई एम जस्ट सीइंग if there is any question. So there is one question, that is, do you have any scanners which give you the list of stocks with? Yes, so this is what I am coming to right now. So these are two scanners that we have built, but of course over a period of time we will build more scanners. So the first one that you would see is in rollover. Okay, rollover में early positioning में you will see this scanner. So यहाँ पे ना see, this is one very unique scanner which we have built, and this probably you won't find it on many of the other platforms that prevail in the market. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ न्यू एक्सपायरी. ओके, सो मान लो कि अगर ये फेब का एक्सपायरी है तो फेब के एक्सपायरी में लोग अपने आप को इतना ओपन इंटरेस्ट में पोजीशन कर रहे हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ. नाउ प्लीज इग्नोर all this hyphen because these are all the newly listed stocks which are there. So over a period of time जैसे डेटा आते जाएगा you will see more data over here, but let's look at for some of the stocks जहाँ पे we have a meaningful data for its past. Okay, so say something like as I was saying you about Infosys. तो Infosys में भी आपको ये ट्रेंड पता चल जाता if you would have seen every monthly. सो आप ये देख सकते हो कि मार्च में उसका ओपन इंटरेस्ट वाज 2,56,00,000. फिर मंथ ऑफ अप्रैल दिस शॉट अप टू 393. नाउ द गुड पार्ट ओवर हियर इज दैट अगर आपको ये डेटा देखना है तो डेटा के साथ आपको ये चार्ट भी दिखेगा. ओके, एंड दिस चार्ट इज एक्सक्लूसिवली एक्सपायरी टू एक्सपायरी चार्ट. ओके, विच मीन्स जो मैंने आपको जो बताया कि ये मार्च में 2,56,00,000 कॉन्ट्रैक्ट था. ओके, विच वाज बेसिकली ओवर हियर. सो you can see over here कि यहाँ पे at the top you will see that the price is corrected 10%. okay, so यहाँ पे ये start of the Feb का था, मतलब for the March expiry the
the rollover, the open interest that you can see over here is basically 2 crore 56 lakh. एंड जब ये डिक्लाइन हुआ, ओके 10%, तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गया. नेक्स्ट मंथ वापस डिक्लाइन हुआ, ओके, and you can see that there was a 4% decline. And when you go to the historical past, you can see that there was some peak over here जहां पर से वापस ये अनवाइंडिंग हुआ एंड द ओपन इंटरेस्ट केम डाउन. सो एट दिस टॉप द ओपन इंटरेस्ट हैड गॉन डाउन. अगेन इन दिस डिक्लाइन ओपन इंटरेस्ट रोज हायर. ठीक है, तो यू थिंक ऑफ दिस एज अ मंथली चार्ट, ओके, जहां पे आपको मंथ ऑन मंथ जो भी अंदर के ये छोटे मोटे जो भी मूव्स रहेंगे वो सारे नहीं दिखेंगे, बट आपको एक्सपायरी टू एक्सपायरी क्या हो रहा है वो चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा. So say for example, I mean when I was looking at this rollover data, Axis Bank caught my eye, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे somewhere around I think 5 crore that used to be the open interest, but after December and so on, you can see that there was a very huge spike. So 44% month on month open interest, मतलब अगर मान लो कि जैन मंथ में लोगों ने ऑलमोस्ट अराउंड 7 crore 69 ओपन इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट से इट हैज गॉन इनटू द जैन मंथ एक्सपायरी. फेब मंथ एक्सपायरी में 11 करोड़ हो गया, ओके, विच वाज नॉट सीन. एंड व्हेन आई सॉ द चार्ट ऑफ दैट, I could see that there is a very big open interest, spike that has happened. Now, as I mentioned to you, I mean, we won't discuss the recent listed stocks. I mean, any stock which is recent, okay, ये हम 3 महीने प्रायर के डिस्कस कर सकते हैं because of the guidelines that we have got from SEBI. And as I mentioned to you, this is just an educational, webinar, not something that we are recommending or something. So this is where it caught my eye. So यहाँ पे ना हम what we can do is that कि जब हम ये नए रोल ओवर पे आते हैं, ठीक है, तो you can see the month on month change. And as I told you, आप newly listed को मत देखिए because you will see abnormally high figures, okay. एंड इंडेक्स को भी मत देखिए बिकॉज ये इंडेक्स में a lot of changes has happened. So but any of the stocks, जैसे फॉर एग्जांपल ये लालपत लैब्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे 69% हुआ. बट सी, ये ना हम ट्रेंड इसके लिए देते हैं ना ताकि ये आपको मंथ ऑन मंथ चेंज आपको थोड़ा वियर्ड ना लगे. बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जब ये 577 था तब ये एक्चुअली वन ऑफ द लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट था. सो दिस एक्चुअली फॉल्स अंडर दिस सिनेरियो, ओके, कि ओपन इंटरेस्ट बहुत ही लो है. तो क्या करने का, तो यहाँ पे जब मैं उसका चार्ट देखूं, एक्सपायरी टू एक्सपायरी चार्ट, ओके, लालपत लैब्स का. So Lalpat Labs, when I've selected, and you can see कि ये open interest इतना high था, and in this entire up move we saw the unwinding happening, okay, and ये देखो ये decline में ना, so what had happened was that ये पूरा short covering आया यहाँ पर से, and then in this decline over here you can see that the open interest was very low, but ये जो expiry जो गया, तो यहाँ पर actually there has been a short built up that has happened, right? And you can see that the open interest is down. But again, if you want to get a good grip of the open interest, try analyzing the stock which has a huge data, okay, like 8-10 years of data. It will give you a very good sense. Because when I used to see some of them, so one was Petronet, that had caught my eye because ये Petronet में अब नॉर्मली हाई ओपन इंटरेस्ट हो गया था, ओके. एंड यू कैन सी ओवर ईयर जब ये डिक्लाइन हुआ तब ये ओपन इंटरेस्ट वाज वेरी हाई, ओके, एंड इतना हाई ओपन इंटरेस्ट हुआ नहीं था. एंड डिस्पाइट सच हाई ओपन इंटरेस्ट ये अपना प्रीवियस लो भी नहीं तोड़ पाया था, ओके, एंड इट वाज एक्चुअली फॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रायंगुलर पैटर्न. तो दिस हैड कॉट माय आई. देन आई थिंक इट वाज यूनाइटेड स्पिरिट्स at one point, that had caught my eye because यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वाज abnormally low at this point, okay. So there was a chance that a trend pickup can happen because you can see over here that the open interest was down, and जब ये ऊपर भी जाने लगा था तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था. तो that was one thing that had caught my eye. The other thing that caught my eye
बट फ्रैंकली जो अब तक कुछ हुआ नहीं है इज परसिस्टेंट सिस्टम. सो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये अभी ये देखिए ये हाई बन गया है एंड ओपन इंटरेस्ट हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली ओवर ईयर. ओके. एंड राइट नाउ ऑफ कोर्स द मंथ इज नॉट ओवर बट यू कैन सी दैट ये डिक्लाइन हुआ है 5%. एंड sorry, in the last month there has been some decline, but now when you go inside the stock, so अगर आपको मंथ ऑन मंथ नहीं देखना है और आपको और डिटेल में आपको देखना है अंदर, तो वो गो टू बटन है वो दबाइए. यहाँ पर आपको सारे प्राइस डेटा आपको सब कुछ मिल जाएंगे. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द एक्सेल शीट ऑफ दैट एंड एनालाइज कि कहाँ पर कितना लॉन्ग बिल्टअप हुआ. लाइक से फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन डेट जहाँ पे ऑलमोस्ट 20% बिल्टअप हुआ. तो दिस वाज 30th Jan. सो ओके 30th Jan आई विल रूल इट आउट बिकॉज ये नया एक्सपायरी भी होता है वो टाइम पे. सो एनीवेयर इन द मिडल ऑफ द मंथ, सो से फॉर एग्जाम्पल दिस, ओके दिस इज 14. सो ये सारे अगर आप देखोगे ये सारे 14% बिल्टअप हुए हैं. 14% इज नॉट अ स्मॉल थिंग एंड ओवर ईयर दिस हैड गॉन अप 10%. सो यहाँ पर मैं ये एनालाइज कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्या ट्रेंड्स थे. जैसे आप देख सकते हो कि ये 30th को तो 27th को बेसिकली यहाँ पे कहाँ पे एक्सपायरी हुआ था एंड यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अब नॉर्मली लो था इफ यू सी द पास्ट 1 or 2 years डेटा, विच मीन्स कि ये जो एक्सपायरी में लोगों ने अपना लॉन्ग छोड़ के गए थे. बिकॉज इफ आई सी दी एक्सपायरी डेट फॉर दिसंबर इट इज 26th. ओके. एंड ओपन इंटरेस्ट सबसे कम किधर है 27th पे. दैट मीन्स ये जो अपमूव आया तो लोगों ने अपना रोल ओवर नहीं किया पोजिशन. एंड as you can see when the prices were going down, open interest started to inch higher a bit and in this decline ये open interest और बढ़ते गया. अभी there has been some up move that we have seen, but nothing meaningful. And what I would then suspect or what I would think is that कि यहाँ पे क्या लोगों ने अपना लॉन्ग पोजीशन जो है वो कैरी नहीं किया. तो इज इट दैट दे आर एक्सपेक्टिंग सम रिवर्सल और सो फॉर दैट एज आई टोल्ड यू आई हैव टू लुक एट द ट्रेंड व्हाट इज हैपनिंग. ओके. सो दिस इज वन ट्रेंड लाइन दैट आई वुड गिव इंपॉर्टेंस अभी बिकॉज ये यहाँ पर से पुल बैक आया. तो दिस इज वन ट्रेंड लाइन दैट आई विल गिव सम इंपॉर्टेंस. एंड जब ये ट्रेंड नीचे में अगर टूट गया एंड आई सी द ओपन इंटरेस्ट राइजिंग हायर, देन आई विल बी वरिड कि लोगों अभी ये शायद ये स्टॉक बहुत बढ़ गया बिकॉज यू कैन सी दैट दिस स्टॉक हैज रिजन ऑल द वे फ्रॉम 1500 टू से 7000 लेवल्स. ओके. so yes, I mean, so this is something that had caught my eye. तो ऐसे ही आपको बहुत सारे चीजें आपको ये रोल ओवर का डेटा जब आप देखोगे तब आपको दिख जाएगा. एंड दिस इज वेरी इजी टू स्पॉट क्योंकि आपको क्या देखना है, मंथ ऑन मंथ चेंज देखना है और प्राइस कितना घटा या बढ़ा वो आपको देखना है. उस हिसाब से आपको समझ जाएगा कि ये एक्सपायरी में एटलीस्ट लॉन्ग हुआ है या शॉर्ट हुआ है. अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए ये अडानी है एंड अडानी में यू कैन सी दैट 29% इंक्रीज हुआ है बट इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट इधर ही है. तो दिस इज नॉट एन आउटलायर फॉर एग्जांपल. ओके. if I see for example Cummins India similar case, BPCL okay similar case, Petronet in fact यहाँ पे कम हो रहा है. HDFC बैंक में भी एक टाइम पे इतना हाई ओपन इंटरेस्ट हो गया था which was of 23 crores, वो भी हाफ हो गया है अभी almost. So over year it was 12,000 and year then you can see 14. Right now so there was one more stock which I had seen, HPCL में बीच में बहुत ओपन इंटरेस्ट हाई हो गया था and it was so okay you might not understand this but if I go into the chart and if you see तो ये जो ओपन इंटरेस्ट था ये एक्चुअली अपने 2015 के हाई पे आ गया था which was very significant. ओके.
एंड जब मैंने अंदर एनालाइज किया था तब एक्चुअली क्या हो गया था कि यहाँ पे टग ऑफ वॉर हो गया था बुल्स एंड बेयर्स के बीच में. दैट मीन्स व्हेन दिस डिक्लाइन हैपेंड, okay, when this decline happened there was a short built up, then this was a period of lull. But again what happened was that कि जब ये यहाँ से इधर बढ़ना चालू हुआ तो there was some bit of long that happened, यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग बन गया था. ओके, और ये डिक्लाइन में शॉर्ट भी बन गया था. तो मतलब लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में ये टग ऑफ वॉर हो रहा था. एंड देन द मोमेंट ये इसने अपना प्रीवियस हाई निकाला तो यहाँ पे बहुत बड़ा अपमूव आया एंड यू सॉ वेरी शार्प अनवाइंडिंग एंड ये स्टॉक ऑलमोस्ट आई थिंक ये 2 से 3 महीने में ओके इट नियरली डबल्ड. लाइक यू कैन सी ओवर ईयर ये 200 के आसपास था, ये ऑलमोस्ट 390 हो गया था. एंड यू नो फॉर अ स्टॉक लाइक लार्ज कैप doubling in 2-3 months is a very significant thing. And again it is not that कि ये पूरा खत्म हो गया, but again there was some pullback and it kept on rising higher. So yes, broadly you can find those things through your through this rollover. Now there is one more thing जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया था. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल ऑफ यू हैव सीन, बट दिस इज बेसिकली द हीट मैप. ओके, बट ये हीट मैप आपको ओपन इंटरेस्ट का भी बता देगा. सो से फॉर एग्जांपल आई वाज रनिंग वन ऑफ द स्कैन्स एज यू नो. सो एक सेकेंड. So as you can see that निफ्टी ने यहाँ पे करेक्शन किया था राइट फ्रॉम 27 सितंबर से लेके 27 जैन. ठीक है, तो मैंने क्या किया था, ये सेम चीज मैंने यहाँ पे स्कैन रन करने गया क्योंकि मुझे ये समझना था कि कौन से स्टॉक्स में बहुत शॉर्ट्स बने हैं बिकॉज दोज कैन बी द रिवर्सल कैंडिडेट्स राइट. तो मैंने क्या किया, ये जो था ये 27 सितंबर से लेके 27 जैन, तो मैंने स्कैन रन किया 27 सितंबर से लेके 27 जैन. ओके, तो यहाँ पे मुझे ये पूरे रिजल्ट मिल गए. ओके, अब मैं इसमें देखूं तो एक्चुअली ये इसमें लॉन्ग बिल्टअप भी हुए थे एंड आई थिंक डॉक्टर रेड्डी वाज द वन. अच्छा, डॉक्टर रेड्डी इसमें नहीं है, बट यस यू कैन सी दैट ये वाले फेजेस में ओके देयर वर सम स्टॉक्स दैट हैड रिजन हायर. नाउ प्लीज इग्नोर these stocks because these were newly listed ones, like NHPC and all. So over there this will be a problem, but you can see that Laurus Lab was one of them. ठीक है, ये Laurus Lab ये पूरे decline में it was in fact rising higher. So if you see something like a Laurus Lab, ठीक है, तो Laurus Lab ये देखो इसने एक्चुअली अपना सितंबर के आसपास, इनफैक्ट सितंबर के थोड़े टाइम बाद ही उसने अपना बॉटम बनाया एंड दिस वाज राइजिंग हायर व्हेन द मार्केट वाज फॉलिंग. ओके, तो दिस वाज अ गुड साइन एंड इनफैक्ट इसमें ओपन इंटरेस्ट ब्रेकआउट भी आया था. तो ये बेसिकली ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर बार जब ये अपमूव हो रहा था तब लोग इसमें अपना लॉन्ग पोजीशन बना रहे थे एंड जब ये करेक्ट हो रहा था तो वो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा था एंड बेसिकली इसमें शॉर्ट नहीं हो रहे थे. मेन तो वो चीज था. तो सो दिस वाज आल्सो वन साइन ऑफ स्ट्रेंथ. देन द अदर थिंग, ये जैसे आप देख सकते हो कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, फिर इनफैक्ट इंडियन होटल आल्सो वाज द वन जो आउट परफॉर्म कर रहा था ओके वो टाइम पे. सो यू कैन सी दैट Jan 27th was somewhere over here जब निफ्टी ने टॉप किया था, बट ये आप देख सकते हो कि ये तो ऊपर ही जा रहा था. सो दीज वर बेसिकली द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स. नाउ आई वांटेड टू फाइंड कि जिसमें शॉर्ट कहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो मैं ये नए स्टॉक्स तो मैं नहीं देख रहा था. ओके, वेट लेट मी रिमूव दिस लॉन्ग बिल्टअप फिल्टर. अभी इसको आप दो वे से आप चेक कर सकते हो. या तो आपको जो प्राइजेस बहुत ज्यादा गिरे उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट देखना है. मतलब कल्याण ज्वेलर्स वाज द वन व्हिच फेल अ लॉट, इंडसइंड बैंक फेल अ लॉट. ओके,
बट मुझे ना ओपन इंटरेस्ट वाइज मुझे सॉर्टिंग देखना है कि किसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हुआ था. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एज आई टोल्ड यू ये सब सारे न्यूली लिस्टेड मत देखना, बिकॉज वो आपको बहुत ही बड़ा ओआई चेंज बताएंगे. बट इफ यू सी समथिंग लाइक, so yeah, see, you can see over here KPIT Tech. Okay, KPIT Tech, I think is relatively newly listed one. I mean, उसका आपको थोड़ा बहुत डेटा मिल जाएगा. सो केपीआईटी टेक ये दिसंबर में हुआ था, बट यस यू कैन सी दैट ये पूरे डिक्लाइन में ये खाली ऊपर ही गया ओपन इंटरेस्ट. मतलब इसमें बहुत सारे शॉर्ट्स है. सो इफ यू गेट अ ट्रेंड रिवर्सल ओवर देयर, यू नो मे बी यू कैन थिंक ऑफ दैट. देन द अदर थिंग वाज, आई थिंक यस दिस वाज वन ऑफ देम. ये मुझे बाद में भी मुझे पता चला कि ये डॉक्टर रेड्डी, क्योंकि बाद में मैंने सेकेंड टाइम भी इसमें स्कैन रन किया था. सो डॉक्टर रेड्डी में फर्स्टली बहुत सारे शॉर्ट्स बने थे, यू नो लाइक यू कैन सी ओवर हियर. ओके, बट इसमें बाद में क्या हुआ जब ये अपमूव आने लग गया था. ओके, सो मैंने ये दौरान भी बीच में भी मैंने थोड़े कुछ स्कैन रन किए थे एंड आई रियलाइज दैट पीपल हैव गॉन लॉन्ग ओवर ईयर. तो ये भी मुझे थोड़ा वो टाइम पे इंटरेस्टिंग लगा था, बिकॉज देयर वाज अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ओवर ईयर. दिस वाज फार्मा वाज परफॉर्मिंग, इट डिड मूव हायर, बट वो इवेंचुअली अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया एंड देन इट फेल. बट दिस ऑल्सो हैड कम टू माई रेडर फॉर टू थिंग्स, क्योंकि इसका ओपन इंटरेस्ट भी बहुत कम है. ठीक है, सो इट हैज अ लॉन्ग वे टू गो इवेंचुअली जब भी होगा. इनफैक्ट मुझे ऐसे लग रहा था कि जब ये पूरा रेंज ऊपर में ब्रेक होगा देन देर इज अ गुड चांस ऑफ ओपन इंटरेस्ट यू नो राइजिंग हायर. बट येस दिस वाज वन दैट हैड caught my eye. The other one in the heat map, okay, I'll have to run it once again. Sorry, 27 सितंबर से लेके Jan 27. सो एज आई टोल्ड यू, मतलब मैंने वो एक्सिस बैंक भी रोल ओवर में देखा था कि वहां पर भी बहुत यू नो बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट स्पाइक हुआ था. सो एक्सिस बैंक इफ यू सी प्राइजेस 25% ये फेज में गिरा था एंड ओपन इंटरेस्ट हैड शॉट अप टू ऑलमोस्ट 200%. तो दैट हैड कॉट माय आई. द अदर थिंग आई थिंक वाज रिलायंस एज वेल. रिलायंस में भी 20% डिक्लाइन हुआ था और 50% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया था. तो अगर मैं ये रिलायंस के अंदर में जाके उसका चार्ट देखूं, so you can see that the open interest was you know almost at an all-time high over here. Okay, you can see over here that it was like a very high open interest that had happened. So मतलब इसमें शॉर्ट्स बहुत है. now the problem over here is that कि यहाँ पे यू नो कोई भी ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज इट इज यू नो सॉर्ट ऑफ फॉर्मिंग ट्राइंगुलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न. तो जब ये इसमें से कुछ ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर या नीचे. ओके, दैट्स वेयर यू कैन गेट सम ट्रेंडिंग मूव, बिकॉज यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो कि प्राइजेस और नीचे गए फॉर एग्जांपल, तो यू विल सी ओपन इंटरेस्ट स्पाइकिंग. बट एट द सेम टाइम अगर ये ट्रेंड लाइन आई मीन ये ट्रायंगुलर से ब्रेकआउट हो गया, तो you will see a lot of unwinding that can happen in Reliance. So yes, basically you know that was something that caught my eye. But the broader point is that for scanning there are two things that will be helpful for you. One is early positioning from rollover data and heat maps, you know, timeline. So these two things will be helpful for you to scan the stocks. Okay, यहाँ पे अगर आपको हीट मैप में भी देखना है कि सपोज ये लास्ट 1 वीक में क्या हुआ, मतलब कौन से स्टॉक्स थे जिसमें लॉन्ग बिल्टअप हुआ. जैसे आप देख सकते हो ये सारे स्टॉक्स थे जिसमें शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, जहाँ पे प्राइजेस नीचे गए हैं एंड ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है. बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू सी कि किसमें लॉन्ग बिल्टअप हुआ है लास्ट 1 वीक में, तो आप ये यहाँ पर से देख सकते हो. द मोमेंट यू सिलेक्ट एनी कैटेगरी यू विल सी इट.
यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग किस में हो रहा है. ओके, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन सी. एंड इसके अंदर जब आप जाओ, जैसे कि अभी ये देखो, ये मैंने देखा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है. ठीक है, तो मैं जब इसके अंदर गया तो I can see the granular data what is happening every day on day. So here also if I see, so I can see कि open interest is at an extreme over here. In fact जब ये low मारा तब ये open interest सबसे highest था. And after that what happened is that कि ये नया low मारा but the open interest is lower than the previous high. That means ये वाले decline में लोगों ने बहुत ज़्यादा shorting नहीं किया है. Okay, so this can also help you to give some clue. And what you eventually do is basically your trend analysis. Okay, what is happening over here? Okay, so over here, the price action got cut over here, so maybe you might want to redraw and think what is happening in the short term. Okay, this is what I can see happening in the short term. So this is how your open interest can help you to analyze and help you to scan your stocks very quickly. Okay, uh, over here if I do futures, I'll come back to the heat map, and yes, and you can see those stocks. So now the scanning should be very very easy for you to find out कि कहाँ पे shorts बने हैं, कहाँ पे नहीं बने हैं. And that's where after understanding these concepts, okay, if you have not understood today, maybe you can relook at this webinar once, and you can post your questions below the video, and we are happy to sort it out. In fact, with that, I would end my presentation, and if there is any questions that you all have, we can take it. So as I told you, as I told you, there are two scanners that you can use. So one is early positioning. This is like consider this like a monthly chart. मंथली चार्ट, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि लोगों ने अपना पोजीशन कैसे रोल ओवर किया है फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक. एंड दूसरा, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म आपको देखना हो तो आपको हीट मैप्स बहुत हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप है, कहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है. ओके, द अदर क्वेश्चन इज फ्रॉम so share market trader, you can just get in touch with our sales team. They will help you out with the best offer. Abhishek Chabra, as I mentioned to you, I mean, I don't want to discuss on stocks because there are a lot of regulations that we deal with right now. If you have any any issue with the concept in understanding, then I'm happy to answer it, but I won't be able to discuss the stocks. I honestly gave enough of examples for you to understand the concept. Okay, so if there are any issues in understanding the concept, please let me know. I am happy to clarify it. And yes, it can be used for Nifty and Bank Nifty as well. So there is some issue that we have seen in the Bank Nifty index, due to the expiry change that had happened in between. We are in the process of fixing that. So once you see that, you will be able to do it in Bank Nifty as well. But yes, it is helpful for everything, Nifty, Bank Nifty, and everything. Okay. Yes, Samir, as I mentioned to you, you can use it for Nifty index as well. So say, for example, see, because it is an index, I can talk about it. So you can see over here, actually क्या हुआ था, open interest in Nifty had surged to its high since the COVID year. Okay, you can see that. And I don't know what has happened, maybe the shift of positioning in the options or so. But earlier, the open interest used to be somewhere around in 3 crore range. Okay, but now that has come down. And after the COVID period,
Okay, you have seen this range developing in the Nifty index, and right now it is at the upper end. So you can see over here at this top, the open interest was very high and लोग long कर रहे थे, and basically in this decline, the entire open interest collapsed. So basically this decline was more due to the long unwinding that happened, and in the second leg of decline, so actually there has been a lot of short built up that has happened. So you can see over here that as the prices are going down, okay, the open interest has risen higher. And if you see that, if the lowest point was this, okay, so you can see that open interest has almost come to its highest point since almost, last 4 or 5 years. So now whether this is, basically going to happen something like that, or will it be that, the rise will happen and this will go down, this is something that we need to see. But for that, the first thing that I would watch out for is that whether the channel breakout is happening or not, because it is struggling at the upper end of the channel only. So we are at a very critical point. uh, if it breaks on the upside, then you will see a lot of open interest unwinding, and that can lead to a good fillip on the upside for the Nifty index. But at the same time, if this higher top, if this marginal higher top higher bottom pattern that we have been forming, if that is broken on the downside, and we see the open interest starting to rise higher, then I will be worried that can it move down and can it go and test this trend line on the downside. So yes, we are at a critical juncture for the Nifty index, but when you see the open interest, it does give you, a very good insight. In fact, if you go inside the stock, this is the Nifty index, and you can see that there has been a lot of short built up, short built up, short built up, short built up that has been happening, in the past few. So basically in this decline, you can see a lot of short built up that is happening. So you can identify the point where the short built up has happened, so that agar wo point nikal gaya, then that's where the short sellers will be skeptical and they will run out of their position, and which can lead to a good move on the upside. uh, So this question is from Ketan: how to analyze option OI with future OI, since future OI is always there? No, Ketan, I think I would second this opinion, and I would say the other way around. Options are usually, used to hedge. जैसे कि अगर मैं लॉन्ग जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पुट से मैं हेज करूंगा उसको फॉर माय पोजीशन. आई वोंट डू इट द अदर वे अराउंड कि मैं ऑप्शंस में मेन पोजीशन कैरी कर रहा हूँ और मैं फ्यूचर्स में उसको हेज कर रहा हूँ. सो दैट इज व्हाई आई फील दैट फ्यूचर्स गिव अस लॉट मोर बेटर ट्रेंड देन दी ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शन में बहुत सारे लोग वो स्ट्रैटेजी करेंगे कि ये लॉन्ग करके वो शॉर्ट, आई मीन एक स्ट्राइक लॉन्ग करके दूसरा स्ट्राइक शॉर्ट करेंगे एंड सो ऑन. So I would say that, people who want to build clean position, they usually build it in futures. Options, I see it as a hedging tool. And options में भी मुझे ऐसे लगता है कि ऑप्शंस में भी whatever data that you see is only relevant from short term perspective. So we have actually made an entire screen for that, strike OI insights in options. Okay, जहां पर से वो आपको ये बताता है एक ही स्क्रीन में, यू कैन गेट ऑल द निफ्टी स्टॉक्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेयर द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज इन कॉल ऑप्शन, इज इन पुट ऑप्शन. So you don't have to manually go and check every stock ka open interest. Now you can see that the spike is very high in 4300 call option, okay, and the put open interest is very high in 3500, I guess. 4000 is 85,000 open interest, and over here, okay, here it is 83,000. So I think, see, now I have to check all this manually, right? Now the beauty is that you can go to options, okay, you can go to the option screen, you can check Naveen Flooring, and you will see it over here. Okay, 4300 में highest call open interest है, 4000 में highest put open interest है. So you will
quickly come to know whether that stock is coming towards the कॉल रेंज और पुट रेंज एंड टू मेक योर लाइफ फर्दर इजी हमने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन दिया है तो बेसिकली अगर वो पुट के आसपास आते रहेगा so if you do it near support, so it will tell you that the stock price is coming towards its near put support level. Okay, so maybe that you might want to take a look out for a reversal. और अगर वो अपने कॉल के ओपन इंटरेस्ट से ऊपर जा रहा है like you see over here mcx is above 6000 call option and you can see unwinding happening, so there is a good chance that an up move can occur. So you can make use of this filter and I'm very sure it will help you a lot in timing the stocks in the short term. But to your question, आई थिंक फ्यूचर ओआई में जो भी ट्रेंड बनते हैं वो मीडियम टर्म के लिए बनते हैं एंड ऑप्शंस में जो भी बनते हैं वो प्रोबेबली शॉर्ट टर्म के लिए बनते हैं. सो अभिषेक suggested when you search, yeah, so I think yes, you can search the heat map. I'm sure you will get a very good idea of that, but I hope you all understand that there are some rules and regulations that we have to follow. So yes, I think with that, just to I think there are no more questions, so just to wind it up. See, as I had mentioned to people who had joined it earlier, I'm not sure if people have missed that, but basically we are running a scheme right now which is only for the webinar. Okay, and if you subscribe for 1 year, the subscription cost is 4700, and if you are subscribing for 6 months it is 2500. This exclusive offer is only for the webinar, during the webinar. So basically if you go through this link that has been provided, okay, so I would request someone from our team to put it once again. But yes, I mean you can see this message over here. Sorry, this is the YouTube link, but if you see the link that we had provided uh, at the start, and in fact, yes, you can get it over here. See, this is the link that is there. You can click over there and you can register yourself. And also one more thing, follow us on Strike. We do give a lot of insights over here on our different tools and the observations. I'm very sure you can find it very helpful, and we also do the webinars weekly as well, so you might get a lot of insights. Like you can see over here, there was something that was shown in the open interest and the price action, so you will get a lot of insights if you follow us on Twitter. Also, we have a YouTube channel which is Strike Money. So Strike Money is for English and Strike Money Hindi is for and Strike Money Hindi is for your for the Hindi audience. So over here, all this webinars and everything you will get to know. So please follow us on Twitter and YouTube for all the webinars that we conduct, and for all the data points that we share. I'm very sure it will be helpful for you. And once again, the link is basically in the description and in the comment box. Where you see it over here. Basically over here you will get it. So please go over there, subscribe it, and I am very sure you will have a very good experience with that. And once again, if you all have any doubt, please do comment in the comment below the video. We are happy to clarify all your questions. And so yes, there is one question. I was earlier watching your recording and suggested that we can find stocks by moving averages. So yes, Samir, there has been there are a lot of things that you will see it over here. So say for example, you can see. So this is your within the technical scanner. Okay, say the simple moving average scanner.
Okay, now if over here I remove the basket and if I put only FNO and say I want to see which are the stocks that are crossing about 20, crossing above, and I want a 20 week. Okay, so I will type weekly over here, and the list that you might get is that all the stocks that are trying to close above the weekly chart. Similarly, if you want it for the daily chart, you will be able to see those as well. So yes, I mean, there are a lot of scanners that you will see it over here. Just please, one thing that notice is that, just make sure that you select the recent data, so that you get the correct answer, because what we have done is that we have provided a feature where if you are into the previous screen and you go back and you come back again, so the sixth will only be shown and not seven. So sometimes people get confused with that. So please make sure to check the latest data. Okay, so now you can see that these are the list of stocks that are breaking above the 20-day average, in the FNO basket. So you can do the reverse thing as well, that you can find which are the stocks that are crossing above the 20 week, or say the 40 week, or 50 or 20 day or the 40 day. And then you can see what is the open interest that has been seen in those front. Okay, so you can do the reverse thing as well. First try to find out the stocks which are breaking out, and then you can go to the heat map and see how it has behaved in a specific period of time. um, Also, Abhishek, fundamental scanners, I think we have mentioned it in our previous webinars as well. The first priority is get to the entire system down to the 1 minute. In fact, if you'll notice, the future module is already live with 1 minute. So whatever price action you will see changing in futures, particularly, this is 1 minute delayed. So you will see this happening. Now this we are in the process of doing it, in basically in options module and all other modules. Once we do that and once we are done with that, we'll start putting out more and more scanners, for which we have already made it, like the fundamental scanners, and there will be a lot more scanners that we will build eventually. Okay. So Samir, yeah, इसमें yes, Samir, we have the EMA scanner as well. So everything that you will see it over here in the technical section, you can see stochastic, super trend, ADX, Bollinger Band, relative strength index. Whatever you want to see, all these things are there over there in the technical scanner. So please subscribe to Strike. And as I mentioned to you, there was this link that was being provided, which you can see over here at the top. Okay, just 4 or 5 messages prior. So click on this link. You will get those good discounts. And this is, like I mentioned, this is exclusively for the webinar period only. And yeah, so do follow us on Strike and YouTube. There are a lot more webinars that we are going to do during the week. So stay tuned for all those updates. Okay. uh, so yes, thanks a lot, and see you until next time. Thank you.